Hello all. This is the chapter Reaching the Age of Adolescence for class 8th. This chapter is all about the teenagers, the changes what happens during the teenage and how is it reached, how people reach the age of adolescence. So this is what is all about in this chapter. We are going to sum up this chapter now. So let us start. This is the picture of a baby. So a born baby, when starts growing, first gets to become a child after certain years. So what we say is, when a child is born, that child is termed as an infant. Slowly and steadily the child grows and becomes so the baby slowly and steadily grows and starts becoming a child. Then the stage comes when the child is getting elder day by day. Some changes are taking place and they come to the age of adolescence. This age of adolescence is between 10 to 12 years of age. Every adolescent age starts reaching the child, whether it is a boy or a girl, after the 10 years of age of childhood becomes an adolescent. We also call this age as a teenage. And after this 10 to 12 years, this is the starting of adolescence, and it carries on till you become an adult, that is at the age of 18. So when you are at the age of 18 years, you become an adult. Here you get to see. And finally, from adulthood, you become old. So this is our life cycle, a life cycle in human. In that life cycle, we come across a stage, we call it as adolescence. Okay. Now coming to the next topic, that is changes in puberty. Let us go through it. Let's talk about puberty. What are the changes during puberty? Now you have come across a new word termed puberty. What is this? We were just now talking about adolescence. Now we have come across a new word which we call as puberty. Is adolescence and puberty different? Yes, little bit. We can relate them. During adolescence, whatever changes are taking place, that is termed as puberty. And they relate it with adolescence. So we can also write changes at puberty. Now let us see what are the changes at puberty. Firstly, here you get to see changes at puberty. Increase in height, change in body shape, voice change, increased activity of sweat and sebaceous gland, development of sex organs, reaching mental, intellectual and emotional maturity. So firstly, what we get to see here in this picture only, that there is increase in height. From the baby here was very small till childhood, the growth is there, and when the person attains adolescence, the height is increased. This increase in height can be seen in both males and females. Then change in body shape. Obviously, boys and girls go through different change in their body shape and they attain a special features also during this adolescence. Coming to the next topic, that is voice change. What is voice change? You might have seen boys having a cracked voice at a certain age of their life. This cracked voice is because of a change in their voice box. We call it as larynx, and there is a protruding part coming out. We call it as the Adam's apple. Here you can check it here. This is the voice box which starts growing in males or in boys, and this creates a change in voice in the boys especially. Girls normally don't go through this voice change or a cracked
voice. This protruding part is called as the Adam's apple. This you all people need to remember. Now next topic is increased activity of sweat and sebaceous gland. We are going to discuss this in our next classes also, and I'll show you some pictures regarding sweat and sebaceous gland. Now you all are aware of sweat. What is sweat? Perspiration. जब भी आपको पसीना आता है, आप उसको क्या कहते हो? मुझे पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है. तो वो गर्मी लगना, पसीना आना, ये बचपन में तो नहीं होता था. अब क्यों हो रहा है? Because the sweat glands have got activated. Where are these presents? What do they actually give out? Everything will be discussed. Sebaceous gland. This word is new to you, but you are facing the challenge with this. Sebaceous glands वो glands होती हैं जो हमारे स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं? ऑयल सिक्रीट करती हैं. तो जब आप देखते होंगे in the age of in your teenage you find your face is having pimples or there are some boils over your face, even to some areas of your body. This is all because of the sebaceous gland. We are going to discuss it in more detail. Development of sex organs. Here, this stage is a training period for all boys and girls for a reproductive phase to attend. That is the reason why males and females or boys and girls get their sex organs developed. That is, the reproductive organs developed. For example, in females, the ovaries start forming ova, and in males, the testis starts forming the sperms. This is the special development that takes place in this age of adolescence. जब ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की डेवलपमेंट्स हो रही है, तो साइड बाय साइड कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण ये सारे चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस एट प्यूबर्टी आ रही है. सो विद दिस डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, चिल्ड्रन ऑल्सो गो थ्रू सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट्स. साथ ही ये वो स्टेज है लाइफ का वेयर चिल्ड्रन नीड टू और रीचिंग देयर मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. बचपन में छोटी छोटी बातों में हम रो देते थे, बट जब हम एडोलेसेंट होते हैं तो हम इस रोने को कंट्रोल करते हैं. हमें ये लगता है कि हमें कोई रोता हुआ देखकर हमें टीज तो नहीं करेगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने इमोशंस पे मैच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो. कई बार बच्चे दोस्तों के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं और कुछ गलत काम करने लगते हैं, बट फिर आप रियलाइज़ करते हो नहीं ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर रीचिंग टू अ मेंटल मैच्योरिटी. यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट थिंग्स आर गुड, व्हाट आर बैड. उसके बाद है इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी. ये क्या होता है इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी? जब आप अपने कैरियर पे, अपने फ्यूचर पे आप फोकस करते हो कि आपको क्या बनना है. दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी. तो अब हम देखेंगे, देखिए जैसे मैं आपको बता ही रही थी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी. देखिए क्या क्या होता है इस टाइम पे. मूड स्विंग्स होना, इंटेंस इमोशन एंड रिएक्शन. या तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं. दिस हैपन्स. दीज आर कॉल्ड एज मूड स्विंग्स. देन कन्फ्यूजन. क्या सही क्या गलत, ये मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए. दिस इज कन्फ्यूजन स्टेट. देन अनसर्टेनिटी एंड इनडिसिसिवनेस. डिसीजन लेने में दिक्कत, सर्टेन नहीं होना, किसी बात के लिए पक्का नहीं होना. ये सारी चीज़ें इस उम्र में होती हैं. फीलिंग मोर प्रेशर फ्रॉम द पियर्स टू फिट इन. आस पास में जो अपने ही फ्रेंड्स हैं वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और आप उस प्रेशर को लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को मैथ्स में ज़्यादा नंबर मिल गए आपसे ज़्यादा, तो आपको प्रेशर हो जाता है कि अरे उसे कैसे मिल गया ज़्यादा नंबर, मुझे भी तो मिलना चाहिए. ये एक प्रेशर है. कोई आपका फ्रेंड है
जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे पेन है, बुक्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि मेरे पास क्यों नहीं, वाई एम आई नॉट प्रोवाइडेड। और आजकल तो सोशल मीडिया सबके ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है। तो पीपल हु आर इन सोशल मीडिया और आप नहीं हैं, तो आपको लगता है मेरे पास ये प्रेशर है कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास फ़ोन है, वो सोशल मीडिया में हैं और वो कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारा प्रेशर सबके ऊपर अब धीरे धीरे बच्चों पे आ रहा है। देन चेंजेस इन रिलेशनशिप विद अदर्स, फ्रेंड्स के साथ झगड़े हो जाना, बेस्ट फ्रेंड के साथ ठीक से ना मिल पाना या बेस्ट फ्रेंड के साथ ठीक से नहीं जम पाना, शेयरिंग ऑफ थिंग्स नॉट पॉसिबल। Then something very important moves into your life in adolescence is attraction towards the opposite gender. Girls get attracted towards the boys unknowingly कि हमारा future क्या होगा, boys get attracted towards the girl unknowingly कि हमारा future क्या होगा. This is a big distraction emotionally for people. Then coming to more sensitive to the world around, बड़ी जल्दी दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, दिस इज़ बीइंग मोर सेंसिटिव. देन फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट अपीयरेंस, अपने आप को देख कर कि मैं अपने फ्रेंड की तरह या उस बच्चे की तरह सुंदर नहीं हूँ, लंबा नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, मेरे बाल ऐसे नहीं हैं. ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट योर इमोशनल मैच्योरिटी. कन्फ्यूजन अबाउट योर सेक्शुअल फीलिंग्स एंड इंटेंसिटी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, अभी हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं. तो डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन होता है कि मेरी बॉडी में ये हो क्या रहा है. वी विल गेट टू नो अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. देन इंक्रीज डिज़ायर टू स्पेंड टाइम अलोन, मी टाइम जिसे कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ. कुछ भी सोचना, समझना, अपने आप को समझना, ये इस उम्र में शुरू हो जाता है, बी इट अ बॉय और अ गर्ल. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड आवर टॉपिक्स: इंक्रीज इन हाइट, increase in body shape, voice change. Just now I have shown you the picture. Then reaching mental, intellectual and emotional maturity. The next video is soon going to come up.